और लोगों के साथ मिक्सिंग कम करना, कम खुफ्तन कम गुफ्तन कम खुर्दन, बातें भी कम करो और डोंट स्पीक टू मच, डोंट ईट टू मच and don't mix with people too much, keep yourself to yourself. ये सूफियों का उसूल होता था. And because this book is about tasawwuf, so adabu sawm are being recited from here. And Sheikh first mentioned that sawm is nisfu sabr, nisful iman, and benefits of sawm. Sawm is from akhlaq sufiya. As-sa'imun yufa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Then he talked about how Sufiya reduced their consumption. And we mentioned the hadith about Nabi sallallahu alayhi wasallam that never in his house was the stove lit for 3 consecutive days. He was never filled with bread for 3 consecutive days. One of those days would be just khajur pani. So he moves on to say, وقالت عائشة رضي الله عنها أديموا قرب باب الملكوت يفتح لكم. Stay close to the gate of Malakut, it will be opened for you. They said, how can we continuously remain on it and close to it? She replied, بالجوع والعطش والظمأ. Malakut माना बादशाहत, अल्लाह की बादशाहत, ऊपर जो आलम मलकूत है, the world above us, high above the heavens. That world can be opened up by continuously knocking on the door. How can we continuously knock on that door? And she replied, by staying hungry and thirsty. If you remain hungry, you will be knocking on that door. You will be staying on that door. And then on top of that, you do zikr, fikr, awrad, wazaif, then the door will be opened and you will reach that high above kingdom, Bashahat, Malakut, and you will be there. Waqila, it is said, ظهر إبليس ليحيى بن زكريا عليهما السلام وعليه معاليق. Iblis appeared before Yahya ibn Zakaria alayhi salam, and he had many bags hanging which he was holding, like we carry carrier bags of shopping. So he was carrying plenty of shopping bags and plenty of bags with him, and there were some things in there. فقال ما هذه? Yahya alayhi salam asked Iblis, what are these bags? قال الشهوات التي أصيب بها ابن آدم. These are shahwats and carnal desires with which I strike the son of Adam. है ना, शहवत है, खाने पीने की शहवत, जिना की शहवत, और पैसे कमाने की शहवत, or desire of different things. With it I strike Banu Adam. قال هل تجد لي فيها شهوة? He said, do you see in there any shahwat for me, that I was ever struck by shahwat, by your desire, by the shahwat you created in me? قال لا. He said, nah, I can't find anything in there for you. غير أنك شبعت ليلة فثقلناك عن الصلاة والذكر. Only one thing. One night you ate to your fill, so we made you weighty and overslept you from your salat and your zikr. One night you ate too much, you were full, so I was able to keep you down, pat you down, and put you back to sleep. And I distracted you from your salat and your zikr. فقال لا جرم أني لا أشبع أبدا. Yahya alayhi salam said, from now on I will never eat to my fill. Iblis said, لا جرم أني لا أنصح أحدا أبدا. And he said, from now on I will never give any nasihat to anyone. So, ye dekho, Iblis, he has his ways of distracting us. And one of the ways of distracting us is to make us eat too much.
and eat to our full, and then he can get control of us. Because then our body is heavy, we fall asleep, we oversleep, and then we do what Iblis tries to tell us. وقال شقيق العبادة حرفة وحانوتها الخلوة وآلاتها الجوع. Shaqiq Balkhi Rahmatullah alayhi said, Ibadat is a skill or a profession, and its workshop is solitude, and its tools are hunger. Let's say an electrician, he has his workshop and he has his tools. So, Ibadat is a skill, it's a hunar, it's a profession, and its workshop is khalwat. You want to do ibadat, you have to get into khalwat, solitude, loneliness, and you have to try and stay alone. And the tools of ibadat are ju' and hunger. When you stay hungry in your khalwat and solitude, your heart lights up, it's illuminated with anwarat, and with those anwarat you get the shock of ibadat. So i'tikaf is coming. Sit in i'tikaf, but sit in khalwat. Khalwat means stay away from your mobile, because if you go on your mobile, you're not in khalwat, you're with the whole world. So in your khalwat and loneliness, you have to give 3 talaqs to your mobile for 10 days. For that khalwat, mobile ke saath kuch lena dena nahi. Then you will be able to get that benefit and the anwar of the khalwat. So ibadat is a profession, and its workshop is khalwat and solitude. Like Huzur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam used to go in Ghar-e Hira for khalwat, sometimes a week, 2 weeks, sometimes a month, just staying there. So this khalwat is the workshop, and alat and tools of this ibadat are the ju' and hunger. وقال لقمان لابنه إذا ملئت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. Luqman Hakim said to his son, dear son, when the belly is full, the thinking process falls asleep, and hikmat becomes dumb, wisdom becomes dumb, and the limbs slump on the bedding or earth from ibadat. What did Luqman Hakim alayhi salam say? Idha muliyatil mi'da, jab mi'da ko bhar dete hain, when you fill up your mi'da, then namatil fikra, your thinking process falls asleep, then you can't think properly. Soch tumhari affected ho jati hai, because you've eaten too much. Overeating, it affects your thinking process. And then wa kharasatil hikmatu, hikmat, wisdom, becomes dumb. Hikmat does not flow from your lips, because you've overeaten. You can't say any words of wisdom. Words of wisdom come when you're hungry, you have that anwarat in your heart. And waqa'adatil a'za'u anil ibada, और आज़ाए जिस्म इबादत से बैठ जाते हैं, इबादत नहीं कर पाते हैं, slump on the floor from doing ibadat. وقال الحسن لا تجمعوا بين الأدمين فإنه من طعام المنافقين. Hasan Basri said, do not gather 2 condiments, 2 salons together, because this is the habit of hypocrites, food of hypocrites. हमारे यहाँ तो दस्तरखान तो रोज डबल होते हैं, चावल भी और रोटी भी और सालन भी और सब्जी भी और चिकन भी और गोश्त भी और पता नहीं कितने खाने होते हैं. ये जो हसन बसरी देखो, कहते हैं भाई एक वक्त में 2 सालन नहीं खाने चाहिए. हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में एक दफे 2 सालन पक गए. हजरत उमर गुस्से हो गए, 2 क्यों पकाए, एक काफी नहीं है? Is 1 सालन not enough? Why did you cook 2 salans? ये थी सलफ़े सालिहीन, एक रोटी और एक सालन बस, उसके अलावा नहीं. अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी लेडीज को बहुत आसानी हो जाए. लेडीज बहुत खुश होंगी हसन बसरी का ये कोट सुनकर. और आप घर जाओगे तो सुनने को मिलेगा आपको ये कोट, हसन बसरी ने कहा है कि 2 सालन नहीं पकाने के, एक ही सालन पकाने का. चलिए, लेकिन बाज मर्तबा ऐसा होता है कि एक सालन पसंद नहीं आता तो आदमी दूसरा खा लेता है, इसलिए वो 2 बनाती है.
कभी गोश्त खाने को जी नहीं चाह रहा, सब्जी खा ली, सब्जी खाने को जी नहीं चाह रहा, गोश्त खा लिया, इसलिए होता है। लेकिन बहरहाल पूरा दस्तरखान मुख्तलिफ डेलिकेसीज से फुल करने की कोशिश न करें, जरा थोड़ी सिंप्लिसिटी को भी इस्तेमाल करें। वक़ाल बाज़ुहुम अऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ाहिदिन क़द अफ़सदत मिअदतहु अलवानुल अग़ज़ियती। Some Sufiya said, I seek Allah's protection from a person who calls himself Zahid, but his mi'dah has been ruined by various types of delicacies and foods. Meaning he calls himself a Zahid. I am a Sufi, I am a Buzurg, I am Zahid. But his mi'dah is full with various types of ghiza and nourishments. He's always eating delicacies to his fill और बहुत खा रहा है, वो जाहिद नहीं है, गड़बड़ है वहां कुछ। वो सिर्फ pretending to be a जाहिद, but in reality he is not a जाहिद। जाहिद तो कम खाते हैं और अमूमन यही होता है, कभी कभार कुछ ज्यादा खा लिया कभी दावत में, इसमें तो चलो समझ में आए, लेकिन रोज रोज बहुत ज्यादा खाने की आदत ये ज़ुहद के खिलाफ है। फयुकरहु लिलमुरीदी अन युवालिया फिल इफ्तारी अक्सर मिन अर्बअति अय्यामिन फइन्न अन-नफ्स इंद ज़ालिका तरकनु इला अल-आदति व तत्तसिउ बिश-शहवति। शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैहि is saying, it is makruh for a murid, disliked for a murid to do iftar continuously for more than 4 days, because at that time the nafs will lean towards this habit and it will expand with its desires. यानी एक मुरीद और सालिक सूफी को 4 दिन मुसलसल इफ्तार नहीं होना चाहिए, चौथे दिन तो उसका रोजा होना ही चाहिए। अगर हफ्ते में मंडे एंड थर्सडे रोजा रखेगा तो चौथे दिन उसका रोजा होता रहेगा। 4 दिन के अंदर अंदर एक रोजा तो मुरीद का होना ही चाहिए। अगर 4 दिन मुसलसल खाना खाए तो ये उसके लिए मकरूह है। तो इस मकरूह एंड डिसलाइक फॉर अ सालिक to be continuously eating iftar for more than 4 days, because when that happens then the nafs will lean towards its own adat and it will expand with its shahwat. وقيل الدنيا بطنك فعلى قدر زهدك في بطنك زهدك في الدنيا. It is said that dunya is your stomach, and according to your zuhd and abstinence with regards to your stomach will be your zuhd in dunya. Meaning the dunya is your stomach, Sufi says, Sufiya Kiram say. And the more zuhd you have with regards to your stomach, meaning the more zuhd you have from filling up your belly, is the more zuhd you will have in dunya. If you want zuhd fi dunya, you will have to have zuhd fil batn. When you will have to eat less, then you will desire for the dunya less. If you eat too much, then you will desire for the dunya too much as well. So dunya is connected to your stomach. The amount of zuhd and asceticism and abstinence you have with regards to your button and your belly is the amount of zuhd you will have in dunya. Allahu Akbar. सूफी लोग भी अजीब हिकमत की बातें करते हैं। फरमाया वक़ाल अलैहिस्सलाम मा मलअ आदमियुन विआअन शर्रन मिन बत्नि हस्बु इब्न आदम लुक़ैमातिन युक़िमन सुल्बहु फ़इन कान ला महालत फ़थुलुथुन लितआमिही व थुलुथुन लिशराबिही व थुलुथुन लिनफ़सिही। Insan does not fill a container worse than the belly. It is enough for Ibn Adam to have few morsels which can keep his back straight. If he definitely wants to eat, then 1/3 of the stomach for food and 1/3 for drink and 1/3 for breathing. हो गया? ये हदीस है मिशकात शरीफ में है कि इंसान ने अब कोई थैला कोई बर्तन ऐसा नहीं भरा जो पेट से ज्यादा बुरा हो। सबसे बुरा बर्तन जो इंसान भरे वो कौन सा थैला है, कौन सा बर्तन है? पेट। The worst bag you can fill is the bag of your belly.
हम लोग तो ये कहते हैं, वो एक हाजी साहब कहते हैं ना, भाई ये पेट की मिसाल तो बलून की तरह से है, फुग्गा। बलून में जितनी हवा डालो फुलाओ फूल जाता है, पेट में जितना खाना डालो वो खुद फूलता जाएगा। और बाजों का पेट वैसे ही माशाअल्लाह बलून की तरह निकल आता है, बढ़ते ही इतना है। तो फरमाया कि ये कोई थैला पेट से ज्यादा बुरा नहीं जिसको इंसान भरे। इंसान के खाने के लिए चंद लुकमे, few morsels are enough which can keep his back straight, because if he is always hungry he will become hunchback. So in order to avoid becoming hunchback and keep the back straight, few morsels, चंद लुकमे काफी है। और अगर बहुत खाने का शौक हो तो फिर 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस के लिए, क्योंकि सांस भी अंदर बराबर जाना चाहिए। हम लोग बहुत खाते हैं फिर शालो सांस लेते हैं, ये शालो सांस नहीं लेना चाहिए, डीप सांस लेना है। जब डीप सांस लेते हैं ना उससे खाना हजम होता है, इसीलिए खाने के बाद चलने को कहते हैं कि वॉक करो, क्योंकि when you're walking you take deep breaths and the deep breathing is what digests the food. इसलिए फरमाया कि 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 सांस। हम लोग तो क्या करते हैं, 3/3 खाने के साथ भर दो, मस्त कलंदर, सब कुछ अंदर, सब कुछ अंदर ढालो, अंदर सब धड़ाधड़ धमाधम। और पानी तो वो उसका रास्ता खुद बना लेता है, ड्रिंक तो अपना रास्ता, सांस तो चलते ही रहते हैं, सांस कहाँ गया, ब्रीदिंग इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इज गोइंग टू ब्रीथ एनीवे। तो इसलिए पूरा भरो यहां तक, बिल्कुल यहां तक दबा कर खूब खाओ, ये हमारी आदत बन गई है। वो पेटू की तरह से सुनाया था ना, है 2 आदमियों ने बहुत खाया, साबित ना खाया, यहां तक बढ़ गया, शादी शादी में गए होंगे, खूब खाया शादी में दबा के। अब जो है फिर पड़े, अब जो है डॉक्टर ने कहा कि 2 गोलियां खा लो, I'll give you 2 tablets, they will digest your food. वो कहते 2 गोली की जगह होती तो 2 अंगूर न खा लेता। If I had space for 2 tablets, I would have eaten 2 more grapes. तो ये खाने का इतना शौक है कि वो कहते हैं कि और खा लेता, थोड़ा अंगूर की खा लेता बजाय टैबलेट के। हमारा ये हाल हो गया है। तो एक मदरसे में तालिब इल्म रहता था, स्टूडेंट, बेचारा खाना पीना मोहल्ले में से किसी ने भेजा तो खा लिया, नहीं तो भूखा, ऐसे ही उसके दिन गुजरते थे। पढ़ता था, असातिज़ा से शौक था, ही यूज्ड टू स्टडी। एक जनाजा आया तो बहुत मालदार आदमी था, बहुत पेटू, बहुत खाने वाला। तो लोग एक दूसरे के पूछ रहे, भाई कैसे इंतकाल हो गया, कैसे इंतकाल होगा, ये तो बड़े अच्छे थे, अच्छे भले चंगे थे, कैसे है, हाउ डिड ही डाई, ही वाज वेरी गुड हेल्थी। तो लोग कह रहे इनको तुखमा हो गया, तुखमा तुखमा तुखमा। अब वो तालिब इल्म को समझ नहीं पड़ी तुखमा क्या है। तुखमा के माना बदहजमी, ओवर ईटिंग, he ate too much, so much that his body could not digest the food and he killed it. That's called तुखमा। so उसको तुखमा हो गया। तो तालिब इल्म ने पूछा तुखमा क्या है, तुखमा ही है। ओ चलो ये बीमारी हमको तो कभी नहीं होने की, हमने को भी अफेक्टेड बाय तुखमा। बेचारा रोज भूखा रहता था, हंगरी रहता था, कहता हमारी मौत तुखमा से नहीं आएगी, ये मालदारों की मौत तुखमा से आ गई है। तो ये कहा हुजूर ने कि अगर खाना ही है तो 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए, 1/3 सांस के लिए। तो हमारे डॉक्टर अच्छा के यहाँ में गया था, मुझे कहते हैं मैदा जो है ना इतना है जितनी हमारी ये मुट्ठी है, बस दैट्स द साइज ऑफ आवर स्टमक बेली। अब इसमें हम बहुत ज्यादा डालेंगे तो मैदे को ट्रबल होगी उसको हजम करने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा खाना डालो, ज्यादा मत डालो। वो कह रहे थे एक दफे कि हमारे यहाँ तो ये एपिडेमिक है ओवर ईटिंग की। लोग बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में, टेक अवे में, डिजर्ट में, और पता नहीं कहाँ कहाँ हुए। और अभी तो रमजान जल्दी है, तो तरावी के बाद माशाअल्लाह ये सब दिन रोज चाय वाला सब फुल होगा, और डिजर्ट विजर्ट की कॉर्नर और मंशा और हमजा और शरबत और ये सब दूध कोल्ड ड्रिंक, ये सब मिठाई मिठाई। तो कहा कि भाई लोगों से कहो कि जरा एहतियात करें, बहुत ज्यादा खाकर ओवर ईटिंग से बहुत से लोग डायबिटिक हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, मर रहे हैं। दुनिया में गरीब लोग भूख की वजह से मरते हैं और हमारे यहाँ खा खा के मर रहे हैं लोग।
तो इसलिए जरा खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। यहां पर भी सूफी लोग यही नसीहत कर रहे हैं। वकाल फतह अल मौसिली सहिब्तु सलासीन शैखन कुल्लुन यूसीनी इंद मुफारकती इय्याहु बितरकी इशरतिल अहदास व खिल्लतिल अक्ल। I stayed in the company of 30 mashayikh, and every shaykh used to give me nasihat and strong advice when I would leave them and separate from them with two things. He said, leave the connection with minor young children, and he would say, eat less. यानी ना ये जो अमरद बच्चे हैं, नाबालिग जो करीबुल बुलूग, जिनकी दाढ़ी अभी नहीं निकली, तो उनके साथ बहुत ज्यादा मुसाहबत मुआशरत न करना, शैतान जो है उनके जरिए भी फितने में डाल सकता है। तो ये कहते थे कि ये जो अहदास यानी जवान लड़के हैं छोटे छोटे, उनके साथ बहुत ज्यादा मुआशरत और लेन देन मेल जोल मत रखना। और दूसरी नसीहत उनकी ये थी कि खाना कम खाना। ये फतह अल मौसिली है, काबिर सूफिया में है कि 30 मशाइख में से हर एक ने जुदाईगी के वक्त मुझे ये वसीयत की, तो उसमें एक ये भी है खाना कम खाना। ये तो फज़लुस सौम वाला बाब पूरा हुआ। आगे अलबाबुल अर्बऊन फी इख्तिलाफी अहवाल सूफिया बिस्सौम वल इफ्तार, वेरिएशन ऑफ सूफियाज हालात with regards to Sawm and Iftar. Meaning, some Sufiya Kiram used to fast a lot and others would fast a little bit, just enough. So, how their state and condition with regards to Sawm and fasting. جمع من المشايخ الصوفية كانوا يديمون الصوم في السفر والحضر على الدوام حتى لحقوا بالله تعالى. A group of mashayikh Sufiya would continuously keep roza in safar and hazar with consistency until they died and met Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, in hazar roza is easy, but in safar it's hard. But these Sufiya Kiram used to keep continuous roza at home and whilst traveling. Throughout the whole year, they would continuously be fasting till they died. कभी भी साल भर में सिर्फ 5 रोजे बना है, बाकी कभी भी आप रोजा रख सकते हैं। 2 ईद के रोजे और 3 अय्याम तशरीक. Other than these 5 days, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, and 3 days after Eid al-Adha, these 5 days, roza is not allowed. But other than that, throughout the whole year, you can fast whenever you want. So these mashayikh used to keep roza continuously. وكان أبو عبد الله بن جابر قد صام نيفا و50 سنة لا يفطر في السفر والحضر. Abu Abdullah ibn Jabir kept a roza for 50 plus years. He would never do iftar, whether he was at home or whether he was traveling. Batao sahab, 50 plus years, continuous roza, not a single day without roza. कैसा शौक था इनको रोजे का. फजहीद बिही अस्हाबुहु यौमन फअफ्तरा. एक दिन उनके शागिर्दों ने उन पर बहुत जिद की, इसरार किया, तो उन्होंने रोजा न रखा, रोजा तोड़ दिया, या खोल लिया, खा लिया. फअतल्ल मिन ज़ालिक अय्यामन, तो इसकी वजह से चंद दिन तक वो बीमार पड़ गए. Because of doing iftar on that day, under the force of urging of his companions, he fell ill for a good few days. So, فإذا رأى المريد صلاح قلبه في دوام الصوم فليصوم دائما ويدع للإفطار جانبا فهو عون حسن له على ما يريد. If a murid and salik feels that the good and betterment of his heart is in continuous fasting, then he should fast continuously and he should leave iftar on one side, because this will help him on beautifying his a'mal
and whatever he intends to do. अगर कोई मुरीद हमेशा रोजे रख सकता हो तो उसको चाहिए कि हमेशा रोजे रखे, इफ्तार न करे, क्योंकि इससे उसको बहुत अच्छी मदद मिलेगी उसके मकसद के लिए, मदद मिलेगी, नफ्स की इस्लाह हो जाएगी। वो रवा अबू मुसल अशअरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम अद-दहरा दुय्यक़त अलैहि जहन्नम हाकज़ा व अक़द तिस्ईन ऐ लम यकुन लहू फ़ीहा मौज़िउन। Abu Musa al-Ash'ari reported this hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: whosoever fasts continuously throughout his life, then Jahannam will be tightened upon him like this, and he made a ring of 90, like this. This is the ring of 90. इतना छोटा सुराख, मतलब इसका ये है कि he will not have any space in Jahannam for himself. There won't be, but Jahannam is tight. If it's a tight hole, you can't go through there. So he won't be able to go through that Jahannam. Jahannam is expanded for the sinners, but for the pious people it's tightened. So if a person keeps roza continuously, Jahannam is tightened like this small hole, so he can't get through there into Jahannam. He won't have any space in Jahannam for him. This is one opinion and one habit of Sufiya. وَكَرِهَ قَوْمٌ صَوْمَ الدَّهْرِ. Some Sufiya disliked continuous roza throughout the whole year and whole life. وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو قَتَادَةَ. One hadith is there as well. سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ. How is the condition of one who fasts continuously all the time? قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ. Neither did he fast nor did he do iftar. Meaning, it's become a habit for him. It's not an ibadat, it's an adat. So you shouldn't fast continuously. This is why some say it's makruh to do that. وَأَوَّلَ قَوْمٌ أَنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ هُوَ أَنْ لَا يُفْطِرَ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَهُوَ الَّذِي يُكْرَهُ. Some Sufiya made ta'wil and interpretation of this hadith as Sawm Dahr is that you don't even do iftar on Eidain and Ayyam Tashriq, which is disliked. Meaning you keep roza on the 2 Eids and the Ayyam Tashriq, the 5 days as well. وَإِذَا أَفْطَرَ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَلَيْسَ هُوَ الصَّوْمُ الَّذِي كَرِهَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. And if a person does not keep roza in these 5 days, then it is not that Sawm which Rasulullah sallallahu alayhi wasallam disliked. He will not be included in there. This is one ta'bir and ta'wil of it. Perhaps this ta'wil is because there is hadith in Sahih Muslim of this Sahabi who asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, inni asrudu sawm afa asumu fi safar. I keep rozas continuously. Am I allowed to keep roza in safar whilst I'm traveling? Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said, in shi'ta fasumu, in shi'ta aftir faftir. If you wish, you could keep roza in your safar as well. If you wish, you could not keep it. You have an option. So from there, we understand that he used to fast continuously. So fi nafsi, it's allowed. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. Some other habits are mentioned after this. We'll read from there tomorrow. Some used to keep 1 day roza, 1 day iftar. Some used to keep 2 days roza, 1 day's iftar. And some used to keep Monday, Thursday, and Friday roza. Sahal ibn Abdullah Tusturi used to eat once in 15 days. And in Ramzan, he would just eat one morsel. And he would do iftar with water just to follow the sunnah. This is their habit with regards to roza. इसको हम कल पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह. सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व इलैक. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा. परवरदिगार आलम, ये सूफिया किराम की नसीहतें हैं. हमें भी या अल्लाह तसव्वुफ का कुछ शिम्मा नसीब फरमा दीजिए और आपकी ज़ात तक वसूल अता फरमाइए और सूफिया की नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए. क़िल्लत ताम और क़िल्लत मनाम और क़िल्लत इख्तिलात मअल अनाम की तौफीक अता फरमाइए.
हमें आपकी मारिफत के अनवार से हमारे सीनों को मुनव्वर और रोशन फरमाइए, हमारी टूटी फूटी दुआएं कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बिरहमतिका। हाफ एन आवर टू इफ्तार, इसलिए